बाद हमने कैंप लगाया था वाटर पॉइंट के पास पाथर नाचुनी में, जो कि 16 किलोमीटर है वाण गांव से। और आज हम लोग निकलेंगे भगवा बासा के लिए, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी है। और कल हम सुबह अटेम्प्ट करेंगे रूपकुंड के लिए, जो कि 5 किलोमीटर है, लेकिन अगेन चढ़ाई काफ़ी है। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं। Finally, we are at Kalu Vinayak. We have trekked this much so far. And the team has reached Kalu Vinayak. We are resting here for a while. And we have reached near the Brahma Kamal fields. Brahma Kamal hi Brahma Kamal. So these are the Brahma Kamals. They are at their last stage. Some have already died, and I might feel that some are broken also. But जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ ब्रह्म कमल दिखाई दे रहे हैं। We are at Bhagwa Basa now. We will be halting here tonight. ये यहाँ पे आलू थेच रहे हैं। इनका मकसद है आलू का थेचवा with pathar, with little garnishing stones. It's 5 a.m. in the morning and we have started the trek towards Roopkund. The target is to reach there before sunrise.
रूपकुंड ट्रैक चमोली जिले में पड़ता है, जिसकी ट्रैकिंग वाण गांव से शुरू होती है, जो कि एक तरफ 26 किलोमीटर की है। रूपकुंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा रूपकुंड होते हुए होमकुंड जाती है, और वहां पे 4 सींग वाले बकरे जो होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और माना जाता है कि वो वहां से सीधा स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा रूपकुंड की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे इंसान के कंकाल पाए जाते हैं, जिसमें से कई सारे चोरी हो चुके हैं, स्मगल हो चुके हैं, और कई सारों पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि लोगों को जानना है कि ये यहाँ आए कैसे। रूपकुंड से सिर्फ 500 मीटर ऊपर जुनार गली नाम की एक जगह पड़ती है, जहां से माउंट त्रिशूल और माउंट नंदा घुंटी एकदम सामने दिखाई पड़ते हैं। This is Nanda Ghunti and that is Roopkund. Breathtaking view. And now we're gonna face the majestic Trishul. Oh, ha! That's what I call a performance. नहीं, यह है त्रिशूल सामने। नहीं, ये क्या है? नंदा घुंटी। We have reached Junar Gali. That's almost 500 meters above the Roopkund, and from here one can witness Trishul like just in front of him. This is Trishul and that is Nanda Ghunti. Oh, this is amazing. Hello. These are the champs who submitted it First. first, Second. third, fourth, fifth, sixth. Hey people out there, what's up? मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सीधा पहाड़ से, और आज हम पहुँच गए जुनार गली। 15,500 फीट, 500 मीटर ऊपर है रूपकुंड के, और सनराइज से पहले पहुँच गए, यानी कि सनराइज अभी यहाँ पे पहुँची नहीं है। एंड त्रिशूल इज गेटिंग सम लाइट्स, एंड दिस साइड नंदा घुंटी इज ऑलरेडी कवर्ड विद सनलाइट, और यहाँ पे अभी बहुत ठंडा हो रहा है, लाइक माइनस में ही होगा ऑब्वियसली टेम्परेचर। वी आर एट 15,500 फीट एंड बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स लाइक breathtaking and very adventurous. We reached Junar Gali within 2 hours. We haven't visited the Roopkund till yet, but we'll visit when we'll descend. And this is the view. This is Trishul Parvat getting the first sun rays. So we actually completed our aim. Our aim was to reach here before the sunlight, and we are here. And this is Nanda Ghunti. In between one can see the Ronti seat, and this is the depth of Roopkund, and this is a 360-degree view currently. It is mesmerizing like anything. Wow.
रही है वीडियो बन रही है मुझे प्रॉपर लगना चाहिए तो प्रॉपर सिनेमाटोग्राफर है। फील आना चाहिए फील top 4,650 4.1 kilometers. and we are using peanut butter. Thank you. ला एक बहुत हल्का चाहिए मुझे। So we have descended from Junar Gali and now we are at Roopkund. Although this kund is now don't look like any kund. I don't know why, but the water is evaporated and the kund is dried. A little snow come ice is here. There are several stories actually at how these bones reached here or are here. You'll see there are several bones, like many bones. But the point is, the research is going on and nobody have concluded it so well till yet. There are bones everywhere. If you'll see at that part, there are several bones. Wow. And this is surrounded by this huge mountain. कितना प्राउड महसूस कर रहे हो तुम? एंटी भाई हड्डियां हाथ में पकड़ के कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया।